Hare Krishna. Hare Krishna to everyone for joining today for the live recitation of Bhagavad Gita, Chapter 9, The Most Confidential Knowledge, Param Guhya Gyan. Dear friends, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। हम लोग भगवद गीता का रेसिटेशन कर रहे हैं इस भगवद गीता जयंती के मंथ में। 25 दिसंबर भगवद गीता जयंती है, इसलिए रोज एक एक चैप्टर का रेसिटेशन कर रहे हैं संस्कृत में, फॉलोड बाय इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो लेट्स कम टू द प्रेयर्स लाइक वी डू एवरी डे। पर उससे पहले मैं आप सबसे शेयर कर दूं, इस चैप्टर में हमें बहुत से आंसर्स मिलने वाले हैं। भगवान हमें बताने वाले हैं थ्रू अर्जुन इन दिस चैप्टर, थ्रू हिज इंस्ट्रक्शंस, व्हाट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अब तक हमने भागवत गीता के शुरू के चैप्टर्स में देखा कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि उसे अपनी क्षत्रिय ड्यूटीज क्यों परफॉर्म करनी चाहिए, किस कॉन्शियसनेस में परफॉर्म करनी चाहिए, और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या है, एब्सोल्यूट नॉलेज क्या है, कर्म योगा क्या है, कर्म योगा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, अष्टांग योगा के बारे में भी बताया गया, और भक्ति योगा, वो सभी चैप्टर्स में भगवान ने इंस्ट्रक्शंस में बताया है। सो आइए अब हम भगवान को प्रेयर्स ऑफर करें, गुरु परंपरा को प्रेयर्स ऑफर करें, और उसके बाद में हम संस्कृत की वर्सेस शुरू करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Dear friends, today for first time I am trying to broadcast on live also. I have provided the link for YouTube live. Please check it out and see if you can watch the live there. I would really appreciate it. Chapter 9 का टाइटल है The Most Confidential Knowledge, परम गुह्य ज्ञान। इस चैप्टर में भगवान बता रहे हैं कि what is that most confidential knowledge, most important knowledge all of us must understand in order to attain the Supreme, in order to have that understanding that we have to engage in bhakti, in order to engage in the supreme pure devotional service in this life so that we can perfect this life. Now, the chapter 9 also highlights that Krishna is the supreme object of worship. हमारे वैष्णव आचार्यस ने हमें बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन दी है। भगवान की जो टीचिंग्स हैं, इस पे कमेंट्रीज और पर्पट्स लिखे हैं श्रीला प्रभुपाद जी ने, और बहुत से वैष्णव आचार्यस हैं जिन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है कि द सोल इज एटर्नली रिलेटेड टू भगवान थ्रू द transcendental devotional service, and by reviving one's pure devotion, where does one go? One returns to Krishna in the spiritual world. So ये जो भगवद गीता है, ये जो बुक ऑफ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, ये जो बुक ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, it is a manual for living that reveals
to be a guidebook for learning to love. How do we learn Bhagwan? How do we learn all the living entities? How can we transform the lust in our heart to love for everyone? So by approaching it with a heart open to love, we all can tap into its timeless essence and relish its life supreme fulfillment. Let's start with the first verse, dear friends. For those of you who have this book, Bhagavad Gita, this book has been translated by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. There are many commentaries on this book available. I love this book, so I am choosing to read recitations and translations from this book. The first verse, so we have the link vedabase.io. You may kindly all go to that link if you do not have the book. Please let me know if you need an online copy of the book. I would be happy to provide you that. First verse. Shri Bhagavan Vacha Idam tu te guhyatamam Idam tu te guhyatamam Pravakshyami anasuyave Jnanam Vijnana Sahitam Yajyatva Mokshase Shupat. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, My dear Arjun, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence. So far, भगवान ने अर्जुन को रिमाइंड कराया कि उसकी क्षत्रिय ड्यूटी क्या है, and that we are all souls. Arjun is a soul. So we can take teachings from the instructions being given to Arjun. तो भगवान ने बताया कि किस तरह से हमारा eternal nature क्या है in loving service of Bhagwan, and then what is the position of Bhagwan, like he is Paramatma within all living entities, our loving relationship with them, and that being in this material existence all the time we can be in constant interaction with material modes of nature, because of which we can be in forgetfulness. We are in forgetfulness till we revive our memory, we revive our consciousness that we are the eternal servants of the Lord, and then we follow the recommendation for the Kali age, which is, please join me, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So one thing is clear, as the devotee hears more and more about Bhagwan, he becomes enlightened. And this hearing process is recommended in all our scriptures, including Srimad Bhagavatam, because the messages of Bhagwan are full of potencies. Srila Prabhupada ne explain kiya hai say that these potencies are realized if topics regarding Bhagwan are discussed among the devotees. And we cannot achieve this by association with mental speculators or academic scholars, for this is the science of self-realization. भगवान ने बोला कि ये जो नॉलेज है वो अर्जुन को किस लिए बता रहे हैं, बिकॉज अर्जुन इज नॉट एनवियस ऑफ कृष्णा, और ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, एंड ये हेल्प करेगी कि ये जो मिजरीज हैं हमारी एग्जिस्टेंस की, जो दुख हमें मिलते हैं, so these are the miseries of material existence which come to us through mind, through other living entities, and by natural forces. And we can get free of these miseries by understanding this confidential knowledge. Bhagwan has given this knowledge to Arjun, and criteria क्या था? अर्जुन ने submissively in the mood of humility भगवान को सरेंडर किया और क्वेश्चंस प्रेजेंट किए, तब भगवान ने अर्जुन को ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दी.
और उस ट्रांसडेंटल नॉलेज में भी अब भगवान इस चैप्टर में मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताने वाले हैं. सो प्रभुपाद ने बिगनिंग में ही ये बता दिया है कि वन who understands Bhagwan Krishna is the supreme personality of Godhead, is pure, and the pure and transcendental personality Bhagwan hai, then these chapters will be beneficial to that person. Otherwise, if there is envy in the heart, then this knowledge will not be useful. Text 2. Friends, please mark this verse. This is a very important verse, and many of us like to memorize the key verses in Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. So this is one of those verses. You can learn this verse and also share with your family. Rajvidya Rajguhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyakshvagamam Dharmyam Susukham Kartam Avyayam. Translation. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion, it is everlasting, and it is joyfully performed. So first verse में, after we learn what is the qualification of one who can receive this most confidential knowledge, okay, and there is more to learn from the purports of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ने बताया है what is the difference between knowledge and realization, and what is the benefit of knowing this most confidential knowledge. And you know, it is so important that the whole chapter is named the most confidential knowledge. So we must definitely think about why should one listen or study Bhagavad Gita from a devotee of Krishna and not some speculators? And what we should also think about, what are the different processes involved in serving Krishna, because this most confidential knowledge is about Krishna. इस वर्स 2 में बोला गया है कि what are the characteristics of this most confidential knowledge. राज विद्या राजगुह्यम. Okay, so भगवान ने बोला है कि this is the king of education and this is the most secret of all secret. Param guhya gyan. It is the purest knowledge. Pavitram idam uttamam, and Pratyakshyavagamam dharmyam susukham kartumavyayam. It is everlasting and joyfully performed. It gives direct perception of the self by realization. देखिए संस्कृत से directly derive करना की meaning क्या है? Anybody can do it. But if we go by one-on-one translation given by our Vaishnava Acharyas, then we stay with the topic and derive the essence as it is. That is why this book is named Bhagavad Gita as it is. We don't want any deviation in it. And this chapter of Bhagavad Gita is called the King of Education because it is the essence of all philosophies explained before, what we have been reading. Let's come to third verse, friends. And don't forget to read the purports at your time. Purports have really beautiful information. So, coming on to verse number 3, and something you can look forward to in this verse number 3. What is the preliminary qualification to receive most confidential knowledge? How does one develop faith? And there is a beautiful analogy. Prabhupada really likes to explain things with the help of examples and stories. So these are analogies. He gives the analogy of watering the roots of a tree. And then there are 3 classes of devotees explained based on faith and conviction. So we will learn how we can elevate our faith and rise from a beginner to a first-class devotee. We should want to be a first-class devotee because we want to serve Krishna in the best possible manner. So verse number 3. Ashraddhandana Purusha
धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि. Translation: Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me. O conqueror of enemies, therefore they return to the path of birth and death in this material world. So भगवान ने बता दिया अर्जुन को कि फेथलेस लोग ये अकॉम्प्लिश नहीं कर सकते भक्ति का प्रोसेस. ओके और वो बार बार बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, डिजीज में ही फंसे रहते हैं बिकॉज वो भगवान को नहीं अटेन कर पाते. और लास्ट चैप्टर 8 में वी स्टडीड हाउ वी कैन अटेन द सुप्रीम. केवल जिनके पास भगवान के लिए वो श्रद्धा होती है, फेथ होती है, वही भगवान को अटेन कर सकते हैं, वही परम धाम जा सकते हैं. सो फेथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कृष्ण भक्ति. लेट्स कम टू वर्स नंबर 4. हरे कृष्णा. लता जेठी, वेलकम. प्रियंका सिंह, हरे कृष्णा. बुलू, सैंसाधरण, यलिया, रिचा सिंह, सतीश फड़के, सुरेखा, आकाश, श्रवण कुमार, अर्पित, दिलीप, and all of you. I appreciate your giving time to join me in the recitation of Bhagavad Gita. Let's come to text number 4. Maya tatmidam sarvam jagat avyaktamurtina matsyathani matsthani sarvabhutani na chaham teshvavasthita. By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. So ये वर्स नंबर 4 के लिए भगवान ने अर्जुन को बताया कि what is his position. Even though Bhagwan is omnipresent, he is everywhere. Why for people in general, Bhagwan is not visible? Don't we all wonder sometimes? एंड भगवान ने एनालॉजी दी है सनशाइन की कि सन किस तरह से शाइन करता है, रेस सब जगह जाती हैं, टू अंडरस्टैंड दैट भगवान इज प्रेजेंट एवरीवेयर. सो प्रभुपाद एक्सप्लेन्स नाइसली अ लॉट ऑफ एनालॉजीज इन हिज पर्पस. प्लीज फाइंड टाइम टू गो थ्रू इट. टेक्स्ट नंबर 4. वी आर रीडिंग चैप्टर 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. टेक्स्ट नंबर 5 नाउ. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना. Translation: And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. So why does Krishna say, although everything is resting on him, he is aloof from his inconceivable energies? And what is the inconceivable opulence of the Lord? To understand this, we can read the purport, but Bhagwan says that everything is resting on him. This should not be misunderstood. The Lord is not directly concerned with maintenance and sustenance of this material manifestation. For example, Prabhupada bolte hain, sometimes we see the picture of Atlas holding the globe on his shoulders. He seems to be very tired holding this great earthly planet, right? He says that such an image should not be misinterpreted in connection with Krishna upholding the entire universe. He says that although everything is resting on him, Bhagwan ne bhi bataya, but he is aloof from it. And the planetary systems are floating in space, and the space is the energy of the Supreme Lord. He is different from space, and he is differently situated. Therefore, Bhagwan says, although they are situated on my inconceivable energy as the Supreme Personality of Godhead, I am aloof from them. Now, this is called the inconceivable opulence of the Lord. Rajni Arora, Hare Krishna. Deepti Kumar, Aruna Saini, Hare Krishna.
So now let's come to text number 6. Friends, we are reading chapter 9, the most confidential knowledge from Bhagavad Gita, and we are on text number 6 now. Yatha यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. Translation: Understand that as the mighty wind blowing everywhere rests always in the sky, all created beings rest in me. So, as an ordinary person, it is difficult for us to understand this. It's inconceivable how huge the material creation is resting on Bhagwan. But Bhagwan is giving an example which helps to understand. Why the example of sky? Because the sky is the biggest thing, biggest manifestation in Bhagwan's creation, which we can think of. And in that sky, the wind or the air is the biggest manifestation in the cosmic world. And the movement of air influences the movements of everything, right? But although the wind is great, it is still situated within the sky. And the wind is not beyond the sky. Similarly, this is how हम समझ सकते हैं that all the wonderful cosmic manifestations are existing by Bhagwan's will. And all of them are subordinate to Bhagwan's will. आपने सुना होगा कि एक घास के तिनके को भी आप हिला नहीं सकते भगवान की इच्छा के बिना. इसलिए everything is moving under Bhagwan's will. And by his will, everything is created, everything is maintained, and everything is annihilated. Still, Bhagwan is aloof from everything, just like sky is aloof from the activities of the wind. So now let's come to text number 7. I see a lot of friends are still joining. Hardik, Joginder, Sandeep, welcome. Nandita. We are reading text 7 of chapter 9, the most confidential knowledge. Bhagwan is giving instructions to Arjun and he is sharing the science of devotional service, the science of bhakti, the science of self-realization. And we are all very fortunate, we are all very blessed to be able to do this recitation or the reading of Bhagavad Gita together in this wonderful month when Bhagavad Gita Jayanti is going to be observed on 25th December. Text 7. Sarvabhutani kaunteya prakritim yanti mamikam kalpakshiye punastani kalpado visijamyaham. Translation: O son of Kunti, at the end of millennium, all material manifestations enter into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. So ये another भगवान का statement है अर्जुन को कि किस तरीके से सारी सृष्टि की रचना, creation, maintenance, annihilation of this material cosmic manifestation are completely dependent on supreme will of the Lord. और एक बार हम इसको थोड़ा समझ लें, absorb कर लें, तो it will be really helpful for us to understand कि ये जो material world है जिसमें हम exist करते हैं, we are all spirit souls. We are not the bodies. And we have to just perform our duties here. We have to carry out our responsibilities in our relationships. But our attitude and our mood will be in such a manner that Bhagwan is at the center of our all activities. Then our life is truly like an offering to Bhagwan. It is truly blessed. And that is how we will achieve perfection of this life. Because this, Prabhupada says, is Krishna consciousness. Text 8. Prakritim swamavastabhya visrajami puna puna bhutagramimam kritsnam
avasham prakrtirvasat. Translation: the whole cosmic order is under me. Under my will it is automatically manifested again and again, and under my will it is annihilated at the end. So भगवान अभी कुछ पास्ट वर्सेस में अर्जुन को यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरा क्रिएशन भगवान द्वारा है, भगवान के अंडर है, भगवान पे रेस्ट करता है, येट भगवान उससे अलूफ है. और भगवान ये साइंस, ये पूरी नॉलेज अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान, बिकॉज अर्जुन इज इन अ मूड ऑफ सरेंडर एंड डिवोशन टू भगवान. उसने भगवान को गुरु समान सरेंडर किया है और सबमिसिवली भगवान से क्वेश्चंस किए हैं टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो भगवान उसको ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, उसे ये परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं. और हमें इसका बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं. We should always take to these activities of श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, क्योंकि ये टॉप 3 एक्टिविटीज़ हैं डिवोशनल सर्विस की, भक्ति की. और जब हम भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब शास्त्र पढ़ते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ये 3 भक्ति की एक्टिविटीज़ करते हैं. Let's come to text number 9. So friends, ये जो verses हैं 7, 8, 9 और 10, please note it that in these verses we get a better understanding under whose order all the material creation, maintenance and annihilation takes place, how Bhagwan is aloof from entire material creation, maintenance, annihilation, and what is the cause of rebirths. Now we are going to talk about what is the cause of being born again and again in different species, and why is it said that God is detached from material activities, yet material nature is working under the will of the Lord. So we are understanding 2 very important terminologies in Bhagavad Gita. We have our own free will and there is supreme will of Bhagwan. So जो हम सोचते हैं कि हम डेली एक्टिविटीज़ अपनी विल से कर रहे हैं, वी आर इंडिपेंडेंट, सो आवर थिंकिंग इज दैट्स आवर फ्री विल. बट एक्चुअली आफ्टर रीडिंग दिस भगवद गीता विल हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी एक्टिविटी और सिचुएशन में 5 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक तो हमारी सोल की फ्री विल होती है, दूसरी भगवान की विल होती है क्योंकि भगवान सैंक्शन करते हैं, and then there are 3 modes of nature, there is time also. So let's read further and get more knowledge or insight on this subject. We are on text number 9, friends, chapter 9 of Bhagavad Gita, the most confidential knowledge. Na cha mam tani karmani nibadanti dhananjaya उदासीन दासीनमसक्तम उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मषु. Translation: O Dhananjay, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, seated as though neutral. So भगवान ने अब ये एक्सप्लेन कर दिया कि one should not think that Bhagwan has no engagement. In his spiritual world, he is engaged. क्योंकि ब्रह्म संहिता शास्त्रों में दिया हुआ है that he is always involved in his eternal, blissful, spiritual activities, but he has nothing to do with the material activities. And material activities कौन carry out करता है? They are carried out by his different potencies. But Bhagwan is always neutral in the material activities of the created world. इसलिए भगवान हमारे कर्मास में इंटरफियर नहीं करते हैं. We have to live our karmas. लेकिन डिवोटीज के लिए भगवान थोड़े पार्शियल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन circumstances. So now we understand that the living entities take their different forms in different species of life according to their past deeds, and Bhagwan doesn't interfere in it. Text 10.
मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते जगद्धि परिवर्तते. Translation: This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. So it's very clearly stated here that Bhagwan, although aloof from all activities of material world, he is yet the supreme director. आप दुख में, विपत्ति में, किसी भी सिचुएशन में इवेंचुअली भगवान से जाके प्रे करते हैं. क्यों? बिकॉज हम जानते हैं भगवान सुप्रीम डायरेक्टर है. एंड द सुप्रीम लॉर्ड इज द सुप्रीम विल and the background of this material manifestation, but the management is being conducted by material nature. शास्त्रों में दिया हुआ है कि जो material nature है without the superintendence of Bhagwan cannot do anything on its own. Yet Bhagwan is detached from all material activities. Text 11. Friends, before we go to text 11, let me also share that text number 11 or 12 में we'll understand भगवान ने किनको foolish person बोला है और why these foolish people consider Bhagwan to be an ordinary human being and they don't worship Krishna. What is the result of that for ज्ञानी, कर्मी and yogis? ये 3 टर्म यूज की गई हैं. प्रभुपाद ने अपने पर्पर्ट्स में एक्सप्लेन किया है. कविता मूंगा, अशोक कट, आई सी अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आर जॉइनिंग. आई वेलकम यू ऑल. आप सभी का अभिनंदन है. नंदलाल होटवानी, तारा, सफेरा, देवोत्तम बोस, शिखा, सुलेक्षर, बी के भास्कर, शंभुनाथ, किशोर वासु, गायत्री, चिन्मय, रिम्पा, तनुश्री, अनीता शर्मा, मंजूरुल, सेल्वशेखर एंड इंदु स्वामी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पल्लवी चक्रवर्ती, प्रसन्नजीत मंडल. So we are reciting the Sanskrit verses by English translation, and I am making few comments which gives us better understanding of these verses. We are coming to verse number 11 and 12. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. Translation: Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the Supreme Lord of all that be. ये तो सही में प्रभुपाद भी एक्सप्लेन करते हैं. बहुत बड़ी मूर्खता है कि भगवान में बिलीव ना करना और कुछ स्पेकुलेशंस करना, कुछ मायावादीज में बिलीव करना. एंड इवन क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान इनकारनेट करते हैं, ही इट अपीयर्स लाइक ही इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग, बट ही इज नॉट ए कॉमन मैन. द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हु conducts the entire creation, maintenance and annihilation of complete cosmic manifestation, he cannot be a human being. Yet there are foolish people who think Krishna is just a powerful man and nothing more. Actually, he is the original supreme personality. ये सब शास्त्रों में भी दिया हुआ है, ब्रह्म संहिता में भी दिया हुआ है. ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड. हम रिपीटेडली ये भी शेयर करते हैं कई बार कि भगवान किसको बोला जाता है. भगवान उसी को बोला जाता है जो 6 ऑप्युलेंसेस में फुल हो. सो डिस्पाइट द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ भगवान्स बॉडी, इट्स फुल ब्लिस एंड नॉलेज, there are many scholars and commentators of Bhagavad Gita who
डिराइड, बिलीव नहीं करते, भगवान कृष्ण को ऑर्डिनरी मैन मानते हैं. द स्कॉलर, प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, the scholar may be born an extraordinary man due to his previous good work, but this conception of Shri Krishna is due to the poor fund of knowledge. इसलिए प्रभुपाद ऐसे लोगों को मूढ़ा बोलते हैं, क्योंकि मूढ़ा जाके या फिर फुलिश लोग जो होते हैं वो भगवान को कंसिडर करते हैं ordinary human being. The foolish consider Krishna as an ordinary human being because they do not know the confidential activities of Bhagwan and his different energies. उनको क्या नहीं पता होता कि they do not know that Krishna's body is a symbol of complete knowledge and bliss, and he is proprietor of everything, and he can award anything. He can award liberation to anyone. And because they do not know Bhagwan has so many transcendental qualities, they deride him. तो ये बात इसमें एक्सप्लेन की जा रही है इस वर्स में. Text number 12. We should never forget this though, as far as you know the knowledge we are receiving in Bhagavad Gita. भगवान शेयर कर चुके हैं अर्जुन को कि although his personal abode is Golok Vrindavan, Param Dham, but he is always staying here by his different manifestations of energy and by his plenary expansion. He is present everywhere in all parts of material and spiritual creation. Text 12. Moghasha mogha karmano mogha jnana vichetasa rakshasim masurim chaiva prakritim mohanim shrita. Translation: those who are thus bewildered are attracted by demonic and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their furtive activities, and their culture of knowledge are all defeated. So, under the modes of material nature, तमोगुण रजोगुण के इन्फ्लुएंस में लोगों के विचार और मति इस तरह की हो जाती है. Demonic and atheistic views, delusions, these are the delusions, and they get totally entangled in fruitive activities, and their culture of knowledge is totally defeated. And these are the bewildered souls. So there are many devotees. Prabhupada कहते हैं ऐसे बहुत devotees होते हैं, they assume themselves to be bhakt, in Krishna consciousness and bhakti, but at heart they do not accept Bhagwan, Krishna, as the supreme absolute truth. So ऐसे लोग कभी भी परम धाम को प्राप्त नहीं करते. प्रभुपाद ने इसमें डिटेल में परपट लिखा है. So destiny कैसी होती है उनकी? They will take birth again and again in the 8.4 million species of atheistic and demonic life, and perpetually their real knowledge will remain under delusion, and gradually they will regress to the darkest region of creation. So bhakti is the only way. This is what we really get out of all these messages we are reading. Bhakti is the way to get out of this cycle of birth, old age, death, disease. And उसके लिए हमें क्या करना है? कली एज में तो बहुत ही सिंपल हो गया है. चैतन्य महाप्रभु ने बोला सिंपलेस्ट, जस्ट चैंट द होली नेम्स. प्लीज जॉइन मी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अरविंद चिकाटवर, कल्याणी अनिल के कुमार, काम्या चुगानी, विशाल मिश्रा, वासु रॉय, welcome. Hare Krishna. We are on verse number 13 of chapter 9 of Bhagavad Gita. We are reading Sanskrit verses with English translation. Vishal Mishra, Basu Rai, Sonu Varshne, Prabha Reddy, Bapu Patel, आप सबका अभिनंदन है. Please follow us. Go to vedabase.io and select Bhagavad Gita. We are on chapter 9. Text 13. Friends, let me share. In verse number 13 and 14, we are going to learn about
beautiful subjects. Who is Mahatma? Who do Mahatmas meditate on? भगवान ने किनको महात्मा बोला है, अब इन वर्सेस में हम पढ़ेंगे. एंड महात्मा क्या करते हैं, भगवान की वर्शिप कैसे करते हैं. आइए, टेक्स्ट नंबर 13. महात्मनास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्. Translation: O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. So, इस वर्स में महात्मा का डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियरली दिया हुआ है. द फर्स्ट साइन ऑफ महात्मा इज ही इज ऑलरेडी सिचुएटेड इन डिवाइन नेचर. वो पहले से ही मोड ऑफ गुडनेस में होता है. एंड ही इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ मटेरियल नेचर. एंड हाउ इज दिस अफेक्टेड, ये 7th चैप्टर में एक्सप्लेन किया है. प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भगवान को सरेंडर कर देता है वो इमीडिएटली माया की वर्किंग से फ्री हो जाता है. कैसे? बिकॉज उसकी एक्टिविटीज सारी भक्ति की होती है. और एक बार जो भक्ति के प्लेटफॉर्म में आ जाता है वो इमीडिएटली 3 मोड्स ऑफ नेचर, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से ट्रांसेंड कर लेता है. सो this is the qualification. One can become free of control of material nature, and that is the qualification. As soon as we become a surrendered soul, we can start on this path to reach that point where we can be fully surrendered. But this is the preliminary formula. प्रभुपाद ने बोला है, क्योंकि हम जो लिविंग एंटिटीज हैं, हम लोग भगवान की मार्जिनल एनर्जी हैं. And as soon as living entity gets free from control of Maya or material nature, he is under the guidance of spiritual nature. And the guidance of spiritual nature is called Devi Prakriti, divine nature. So when one is promoted in this way by surrendering to Bhagwan, one attains the stage of great soul Mahatma. And what does महात्मा do? ऐसी जो पर्सनालिटीज होती हैं, जो महात्मा होती हैं भगवान, वो लोग क्या करते हैं, प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है. महात्मा डज नॉट डाइवर्ट हिज अटेंशन टू एनीथिंग आउटसाइड कृष्णा बिकॉज ही नोज परफेक्टली वेल दैट भगवान इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सन. महात्मा जो होते हैं वो अपनी चालीसाज नहीं बनाते. महात्मा ये नहीं बोलते कि प्लीज कम, हवा में हाथ घुमा के सिद्धियां दिखाते हुए जनरल पॉपुलेस को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, मिसलीड नहीं करते हैं. महात्मा नो इन देयर हार्ट कि भगवान कौन है. भगवान कृष्ण इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सन एंड ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सच ए महात्मा और ग्रेट सोल डेवलप्स थ्रू द एसोसिएशन ऑफ अदर महात्मा प्योर डिवोटीज. एंड प्योर डिवोटी जो होते हैं ना, वो भगवान के दूसरे फीचर्स से अट्रैक्ट नहीं होते. वो बस भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को प्लीज करना चाहते हैं. एंड दे आर ओनली अट्रैक्टेड बाय 2 आर्म फॉर्म ऑफ श्याम सुंदर फॉर्म ऑफ भगवान. एंड उनकी एक्टिविटीज क्या होती है, वो भगवान पे अपनी कॉन्शियसनेस फिक्स रखते हैं, भगवान पे मेडिटेट करते हैं, भगवान के होली नेम्स लेते हैं. और उनको देख के बाकी सोल्स को भी इंस्पिरेशन आता है, क्योंकि ऐसी जो महात्मा सोल्स होती हैं, दे आर ऑलवेज एंगेज्ड इन अनस्werving सर्विस, कांस्टेंट सर्विस ऑफ भगवान इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. टेक्स्ट 14. सो अब भगवान ये जो महात्मा होते हैं, इनके बारे में भगवान फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. Friends, this is one verse you want to memorize. This is a very beautiful and wonderful verse in Bhagavad Gita.
I keep identifying all the important verses which, if you want, you can memorize, understand them really well, and share with your friends and family. The translation of this verse 14 in chapter 9 is, always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. इस पर्टिकुलर वर्स में बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं. भगवान को पाने के लिए, परम धाम को पाने के लिए, भक्ति में एंगेज होने के लिए, एक्चुअली नॉट जस्ट भक्ति, शुद्ध भक्ति में एंगेज होने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं? वी नीड डिटर्मिनेशन, वी नीड डिवोशन, वी नीड एसोसिएशन ऑफ महात्मास, एंड वी नीड टू चैंट, एंड वी नीड टू बो डाउन बिफोर भगवान. देखिए कितनी सारी बातें, इन छोटी सी 2 लाइन्स में भगवान ने इतनी सारी बातें अर्जुन से कह दी कि महात्मा जो होते हैं, दे कैनॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय रबर स्टैंपिंग एंड ऑर्डिनरी मैन. सो महात्मा के सिम्टम्स बताए गए हैं कि ही इज ऑलवेज एंगेज्ड इन चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ भगवान. ही हैज नो अदर बिजनेस. He is always engaged in glorification of Lord. In other words, he is not a Mayavadi or an impersonalist. When the question of glorification is there, one has to glorify Bhagwan. How? How do we glorify Bhagwan? By praising his holy name, his eternal form, his transcendental qualities, his uncommon pastimes. भगवान की लीलाएं, इसलिए इतने भगवत सप्ताह और इतने स्क्रिप्चर्स की रीडिंग होती है. क्यों? क्योंकि भगवान का ग्लोरिफिकेशन, भगवान का गुणगान, दैट इज व्हाट डिवोटीज फाइंड प्लेजर इन डूइंग. दे फाइंड अ ग्रेट प्लेजर विद इन देयर हार्ट्स एंड दे प्लीज अदर इंटरेस्टेड सोल्स ऑल्सो. सो वन हैज टू ग्लोरीफाई ऑल दीज थिंग्स. देयरफॉर अ महात्मा इज अटैच्ड टू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं. और आपको पता है, हमारे जो वैष्णवाचार्यस हैं ना, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल लिटरेचर लिखा है इन सब क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए, कि किस तरीके से हम भगवान के लिए अटैचमेंट डेवलप कर सकते हैं, अट्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम भगवान के नाम को जपने में एब्जॉर्प्शन डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से डिवोशन और लव और अफेक्शन डेवलप कर सकते हैं. क्योंकि जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं ना, we should do it in the best mood. We are making an offering, right? So we want it to do in the best possible manner. So another point which was mentioned here, which was in devotional service, there are certain activities which are called determination, which has to be done in a determined way, like fasting on specific days, like Ekadashi, या फिर अलग अलग फेस्टिवल्स जो आते हैं. एंड ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ऑफर्ड बाय ग्रेट आचार्यास हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन शेयरिंग विद अस हाउ वी कैन go to Paramdham and how we can learn in the association of devotees to get an entry into the transcendental world. So जब महात्मास खुद इस तरह की लाइफ जीते हैं, वो हमें खुद भी बहुत इंस्पायर करते हैं, because we try to follow in their footsteps to get the desired result. So in this chapter, इस chapter 9 में second verse में भगवान ने बताया कि डिवोशनल सर्विस ना केवल ईजी है, इट कैन बी परफॉर्म्ड जॉयफुली, हैप्पी मूड में, राइट? किसी को सल्क और उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बोर होने की ज़रूरत नहीं है. जब कोई भक्ति में एंगेज होता है, इट कैन बी डन रियली जॉयफुली. एंड वन डज नॉट नीड टू अंडरगो एनी सीवियर पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी. ही कैन लिव दिस लाइफ इन डिवोशनल सर्विस guided by a spiritual master, a genuine, a bona fide guru, and in any position, either as a householder or sannyasi or as a brahmachari. Bhakti कोई भी कर सकता है, anywhere in the world, and they can all become महात्मास. यहाँ पे महात्मा का मतलब great soul है, saintly soul. Everybody can achieve that.
इवन एक गृहस्थ की लाइफ में जीते हुए आप महात्मा बन सकते हैं. हाउ? बाय एंगेजिंग इन शुद्ध भक्ति. आपकी जो सारी एक्टिविटीज हैं गृहस्थ लाइफ की, इफ यू परफॉर्म देम विद द प्रॉपर कृष्णा कॉन्शियस माइंडसेट, you can become a Mahatma, a great soul. Text 15. Jnana yajnena chapyanye yajanto mamupasate ekatvena prathatvena bahuda vishvato mukham. Friends, we are on verse number 15 of chapter 9. Let me see how many verses we have. I think there are around 30 verses, but let me verify. There are 34 verses. So we will be doing 17 verses today. This is the part 1 of chapter 19. I don't want to rush through this chapter. We will do part 2 of chapter 9. I'm sorry, I said chapter 19. This is chapter 9, which is called The Most Confidential Knowledge, परम गुह्य ज्ञान. आज हम 17 वर्सेस करेंगे और कल पार्ट 2 में नेक्स्ट 17 वर्सेस करेंगे. राइट नाउ वी आर ऑन वर्स नंबर 15. So the translation of verse 15 is, others who engage in sacrifice by cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one without a second, as diverse in many and in the universal form. So ये वर्स पिछली वर्स को सप्लीमेंट कर रही है. यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो प्योरली कृष्णा कॉन्शियसनेस में है और महात्मा है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी अभी डिस्कस किए, yet there are other kind of people who are not exactly in the position of महात्मा, पर वो भगवान की वर्शिप करते हैं. सो ये सब डिफरेंट वेज हैं एंड इनकी कैटेगरीज हैं. पिछले चैप्टर में हमने 4 कैटेगरीज के बारे में लर्न किया कि डिस्ट्रेस लोग आते हैं भगवान के पास, जिसको वेल्थ चाहिए वो भगवान के पास आते हैं. इंक्विजिटिव पीपल कम टू भगवान एंड दोज हु आर एंगेज्ड इन कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज. बट there are further people who are lower, who are trying but different agenda. And इनमें से जो दूसरे लोग होते हैं जिनको लोअर माना गया है, वो खुद को ही वर्शिप करने लगते हैं या कुछ स्पेक्युलेट करते हैं या भगवान का कुछ डिफरेंट कॉन्कॉक्शन कर लेते हैं या फिर भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं जो विश्व रूप है भगवान का और उसकी वर्शिप करने लगते हैं. सो इन सब में से जो भगवान को, जो खुद को ही वर्शिप करने लगते हैं, ये ऐसे लोग कुछ भी स्पेक्युलेट करते हैं. सो देर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ गॉड वर्शिप, फॉर दे कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट द मटेरियल बॉडी बट आर एक्चुअली स्पिरिट सोल. एटलीस्ट सच अ सेंस इज प्रोमिनेंट. सो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कैटेगरी ऑफ मायावादीज और इम्पर्सनलिस्ट भी होती है जो भगवान को इस तरह वर्शिप करते हैं. और देन देर इज अनदर कैटेगरी ऑफ वर्शिपर्स जो अन्य देवी देवताओं को भी पूजते हैं. एंड देन देर इज अ थर्ड क्लास ऑफ पीपल हु कैनॉट कंसीव ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड दिस मटेरियल यूनिवर्स. सारा इसमें क्रिएशन की ही बात करते हैं. दे कंसिडर यूनिवर्स टू बी द सुप्रीम, कोई बड़ा एंटिटी है और उसकी वर्शिप करते हैं. बट वो भी भगवान का ही फॉर्म है, क्रिएशन. सो ये नॉलेज प्रभुपाद ने यहाँ पर एक्सप्लेन की है. सो वर्स नंबर 15 और 16 में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हमें आंसर मिलेगा कि व्हाट आर द अदर कैटेगरीज ऑफ पीपल हु आर नॉट महात्मा बट सम काइंड ऑफ गॉड वर्शिप दे डू, एंड व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड अबाउट द पीपल हु आर एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा. वो तो हम सबको पता ही है, दे आर महात्मास. Text 16. Aham kraturaham yagna, aham kraturaham yagya swadaham hamoshadham mantroham aham evajyam aham agniraham hutam. Translation. But it is I who am the ritual,
I, the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant, I am the butter and fire and the offering. So भगवान ने पिछले चैप्टर में हम सबको अर्जुन के थ्रू ये नॉलेज दी थी कि जब हम सन और मून देखते हैं, जब सनलाइट और मूनलाइट देखते हैं, एंड एज वी टेक वाटर टू ड्रिंक, all these instances remind us about the creation, how Krishna is present in the creation. और अब यहाँ भगवान और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं हम लोग को. So, ये सब जानने के बाद भी फायर का भी जैसे एग्जाम्पल है, that the fire is also Krishna because fire is one of the 5 material elements and is therefore claimed separate energy of Krishna. So, इस तरह से, in other words, those who are engaged in rendering devotional service unto Krishna are to be understood to have performed all sacrifices recommended in Vedas. Text 17. Pitamahamasya jagato mata dhata pitamaha vedyam pavitram onkara riksam yajurevacha. Friends, we are on verse 17 of chapter 29. This is the last verse we are doing today from this chapter. This is part 1 of the recitation of chapter 9, the most confidential knowledge. We will do the other 17 verses tomorrow. I am the father of this universe, the mother, the support and the grandchild. I am the object of knowledge, the purifier and the syllables Om. I am also the Rig, the Sam and the Yajurved. So देखिए भगवान ने सिंपली अर्जुन को अपनी सुप्रीम पोजीशन की नॉलेज किस तरह से दी. भगवान अर्जुन को साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बता रहे हैं, साइंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बता रहे हैं, भगवान उसको एब्सोल्यूट नॉलेज बता रहे हैं, एंड भगवान अर्जुन को मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बता रहे हैं. So entire cosmic manifestation, which has both moving and non-moving, are manifested by different activities of Krishna's energy, and in material existence we create different relationships with different living entity who are nothing but Krishna's marginal energy, and under the creation of Prakriti some of them appear as father, mother, grandfather, creator, but actually everyone is part and parcel of Krishna. So ये जो सारे हमारे relationships हैं, they are nothing but Krishna because all energies belong to Krishna. So as such, these entities who appear to be our relatives, they are nothing but Krishna. Not only are our father, mother parts and parcel of Krishna, but being part and parcel of Krishna is Krishna. ऐसा प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं. Everything which belongs to Krishna is a part of parcel of Krishna is Krishna. So सारे जो वेद हैं, they aim at study of learning about Krishna. Whatever we want to know through Vedas is a progressive step towards understanding Krishna. And this subject matter helps us to understand and purify our constitutional position. And similarly, one who is inquisitive, we should be inquisitive. So one who is inquisitive to understand all Vedic principles is also a part and parcel of Krishna, and such, this means this is also Krishna. So इसमें example दिया गया, Vedic mantras, Om, also called Pranav, is a transcendental sound vibration. It is also Krishna. And because in all the hymns of all the 4 Vedas, Sam, Yajur, Rig and Atharva, the Pranav or the Onkar is very prominent. It is understood to be Krishna. So इस वर्ष में भगवान ने बता दिया कि how we should see his presence in everything. So we have completed 17 verses. We will do the remaining 17 verses tomorrow. I hope all are being benefited, having some understanding how we can start observing and feeling in our heart presence of Krishna in every soul, presence of Krishna in all the activities, presence of Krishna when we look at the sun and the sunlight and the moon and the moonlight, presence of Krishna when we cook, when we see fire,
when we see prasadam, when we see all these scriptures, when we see the devotees, there is Krishna everywhere. This is what Prabhupada has explained in his purports. So, dear friends, as we go through all different challenges in our life, we should somehow remember always that ultimately in these Kali Age times, this Kali Age is like an ocean of faults. We have, our duration of life is not much, short duration of lives, and people have less intelligence, less memories, people are quarrelsome, they don't trust each other. People have a lot of challenges in their lives, and especially in these pandemic times, it really helps to go through these teachings because that gives us hope. It gives a lot of hope and courage, and it helps us remove the fear from our hearts. It helps us manage the anxiety in our hearts and mind. And not only we can understand this to get some mental strength, we can also help our loved ones understand this. So dear friends, if you find some time to read few verses with the purports, with friends and family, that is the best thing we can do for them. Not just now, not this month, always. So get a copy of Bhagavad Gita for yourself, get a copy for your friends and family. Please join me. Let's all chant together the recommended thing we need to do in the Kali Age times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So dear friends, I really appreciate many of you are still joining. So I tried to do a live on the YouTube also. I will check a little later to see how it went. I'm learning how to use it. But I'm happy to see you all on the Facebook. Shalu Raj, Hare Krishna, Bharati Ganguly, Natwar Lal Raja, Parashuraman, Manasi, Manju, ACS Parinita, Pinku, Burman, Komal, Kishore, Ginu, Manoj, Deepti, Suryapati, Yash, Sujan. I must share with all of you that the blessings of Gita teachings is being showered in all our lives. All of us who are taking the benefit of these instructions of Bhagwan to Arjun through the Gita teachings, our lives are being transformed in a major way. We may not realize it today, but slowly we will observe that. Good things are happening, auspicious things are happening, and transcendental things are in store for future. Please have faith. And remember what we studied in last chapter? We studied about determination. भगवान ने कहा जो determination के साथ भगवान की भक्ति में steps लेता है, भगवान उनसे बहुत pleased होते हैं. वो भगवान को, ऐसी souls भगवान को बहुत dear होती हैं. So friends, don't delay. Have some faith and resources are available. So have a wonderful evening, wonderful day in Krishna consciousness. Please join again tomorrow for reading part 2, verse 18 onwards of chapter 9 of Srimad Bhagavad Gita, the most confidential knowledge. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srila Bhagavad Pad ki jai. Anant Koti Vaishnav Vind ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol.